Assalamu alaikum students. How are you? I hope you had nice holidays. In the previous lectures, we discussed the main points of the lesson why boys fail in college and its important MCQs and their answers. I hope those were clear to you. Today, we will discuss the important questions and their answers of this lesson. So let's start with the questions. Question number 1. According to the author, there are some boys who fail because they do not try. Who are they? Can we help them? So there are three parts of the question. First is that there are some boys who fail because they do not try. So we have to tell who those boys are. And then the second part of the question is that if we can help those students or not. The answer to the question is they are those boys who do not have any aim in life. So aim means मकसद. So ये वो boys हैं जिनका life में कोई मकसद नहीं होता. They do not try to pass and this leads to their failure. वो try ही नहीं करते pass होने के लिए and this ultimately becomes the reason for their failure. They join college just for fun. So their purpose for joining college is that they want to have fun. They should be guided towards the aim of their life as a student. So, how can we help them? We can help them if we tell them that the aim in their life is not to have fun but to learn and to become learned people in life. So, that is how we can help these students. Question number 2. How do mistaken ambitions on the part of boys and their parents lead to the failure of the boys? So, in this question, you have to tell that there are ambitions of parents and boys that are mistaken. They are not correct ambitions, and those ambitions lead to their failure because their aim is not right, the choice of subjects is not right. That is why these students fail. Mistaken ambitions on the part of the parents leads to the failure of boys because the students do not take any interest in the subject chosen by their parents. So why do these boys fail? Because their parents choose subjects for them in which these boys do not have any interest. So without interest, they cannot learn these subjects and they fail. They stop doing hard work in their studies. So when they do not have interest, they do not work hard and this leads to their failure. So mistaken ambition से कैसे स्टूडेंट्स फेल होते हैं कि उनका उन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होता. जब इंटरेस्ट नहीं होता तो वो उन पे मेहनत नहीं करते एंड अल्टीमेटली दे फेल. Then the next question is there are some boys who have done well at school but fail to make their mark at college. Who are they? Do you have such boys in college in your country? So there are again three parts of the question. The first part tells us that there are some boys who do good in school but they fail to get good results in college. First of all, we have to identify who these boys are. And then the writer or the question is asking us that if there are such boys in our own country or not, यानी हमारे अपने मुल्क में ऐसे बॉयज या ऐसे स्टूडेंट्स हैं या नहीं हैं. These are boys who are bright and intelligent but they are not hard working. So ये कौन से boys होते हैं जो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन कॉलेज में फेल हो जाते हैं? ये वो बॉयज़ होते हैं जो ज़हीन तो होते हैं लेकिन वो मेहनत नहीं करते. They become overconfident and फेल इन कॉलेज. सो उनके फेलियर की मेन वजह क्या होती है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. उन्हें लगता है कि वो कम पढ़ के भी ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं बिकॉज दे आर सो इंटेलिजेंट. Such boys could be found in the colleges of every country. Ours is no exception. So इस तरह के boys हर country में होते हैं और हमारे country में भी इस तरह के boys मौजूद हैं. So this is the answer to this question. Now we will move on to the next question.
How does financial pressure lead to the failure of students described in the lesson? Do you have similar cases in your country? So this question has two parts. First part में आपने बताना है कि फाइनेंशियल प्रेशर से स्टूडेंट्स कैसे फेल होते हैं, और सेकंड पार्ट में बताना है कि क्या आपके अपने कंट्री में इस तरह के बॉयज़ हैं या नहीं हैं. Let's move on to the answer. Poor students have to do some job to meet their educational expenses. This exertion, dual means double. This dual exertion affects both their health and studies, and so they fail. Yes, we do have such cases in our country. So जो poor students हैं उन्हें अपने expenses पूरे करने के लिए कोई ना कोई job करनी पड़ती है, और जब उन्हें double effort करनी पड़ती है यानी studies पे भी और वर्क पे भी, तो इससे उनकी हेल्थ और स्टडीज़ दोनों इफ़ेक्ट होती हैं और इसी वजह से वो फेल हो जाते हैं. और हमारे अपने कंट्री में भी इस तरह के केसेस मौजूद हैं जहां स्टूडेंट्स अपनी पॉवर्टी की वजह से पढ़ नहीं पाते, या फिर जब उन्हें डबल जॉब्स करनी पड़ती हैं तो उसकी वजह से वो अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते और इसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. To what extent does the question of health lead to failure at college? How far can the college authorities with their medical officers help students in such cases? Again, this question has two parts. The first part is कि किस हद तक health students के failure की वजह बनती है और किस तरह से college authorities medical officers की मदद से students की इन cases में help कर सकती हैं. सो फर्स्ट हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि हेल्थ रीजंस किस हद तक फेलियर की वजह है, एंड सेकेंडली हमने बताना है कि कॉलेज अथॉरिटीज़ और मेडिकल ऑफिसर्स इन स्टूडेंट्स की किस तरह हेल्प कर सकते हैं. Both physical and mental health are very important factors for students. If a student is suffering from some disease, he cannot concentrate on his studies. As a result, he फेल्स. सो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, और अगर एक स्टूडेंट किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा हो तो वो अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता और एज अ रिज़ल्ट वो फेल हो जाता है. दैट इज़ वाई कॉलेज अथॉरिटीज़ और मेडिकल ऑफिसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कैन हेल्प दीज स्टूडेंट्स इन सच केसेस. इस क्वेश्चन के जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर आगे एक अलग क्वेश्चन में मौजूद है. सो दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा. आई विल लेट यू नो व्हेन वी रीच दैट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्लेस वुड यू अकॉर्ड टू स्पोर्ट्समैन इन कॉलेज. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि स्पोर्ट्समैन की कॉलेज में क्या पोजीशन होती है, या उन्हें कॉलेज में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और उसने यानी क्वेश्चन में आपका ओपिनियन पूछा गया है. So let's see. The main purpose of college is to impart education. Sportsmen should be given respectable position in the college, but they should not be allowed to neglect their studies at any cost. So college का main purpose क्या है? Education provide करना. तो स्पोर्ट्समैन जो है उनकी कॉलेज में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन होनी चाहिए, लेकिन उन्हें उनकी स्टडीज़ को इग्नोर करने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, और उनकी स्टडीज़ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए जितनी कि उनकी स्पोर्ट्समैनशिप को या उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को दी जाती है. Question number 7. There are some students who join college for the fun of it. Should they be allowed to stay? Again, this question asks you that first of all there are some students who join college because they want to have fun. So now the writer is asking, or the question is asking, if these students should be allowed to stay in the college, यानी उन्हें stay college में रहने देना चाहिए या college से expel कर देना चाहिए. Students who join college for fun, they should not be allowed to stay because they can spoil other students as well. So वो स्टूडेंट्स जो कॉलेज को सिर्फ फ़न के लिए ज्वाइन करते हैं उन्हें कॉलेज में रहने नहीं देना चाहिए, बिकॉज वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी स्पॉइल करते हैं और उनकी कंसंट्रेशन भी उनकी स्टडीज़ से हटा सकते हैं, इसलिए उन्हें कॉलेज से एक्सपेल कर देना चाहिए. So these were some of the important questions and their answers. That is all for today. I hope you have understood the questions and their answers. If there is any difficulty, you can ask.
In the next lesson, we will discuss the remaining questions of this lesson. Till then, Allah Hafiz.